goes. ओके 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 क्या क्या पढ़ना है आज? बहुत कुछ पढ़ना ही है, बहुत कुछ. So tomorrow it is subject to change. Okay. So Dr. Vidya Shri tomorrow. Clinical liver disease. आज क्या था? आज इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, कल है लिवर डिसीज. ओके. Basically I have to know all those things. Clinical examination of the liver per abdomen. उसके बाद है डॉक्टर प्रवीण, उसके बाद है फिर डॉक्टर दिव्या. अब तेरी लेट्स गो गाइस. YouTube. लिवर हेपेटाइटिस का केस है ना. पर एब्डोमेन, एग्जामिनेशन ऑफ पर एब्डोमेन, clinical examination of per abdomen. Clinical examination per abdomen. So what all components do we have? इसके लिए मुझे वो निकालना पड़ेगा. I guess what is that thing called? Archid bulur. Guys, what is up? Who is here? Archid bulur. This is Archid bulur. This is for clinicals, general medicine. One of the most interesting book written by Dr. Archid bulur. Fascinating. So this is the author because of whom all the final year students managed to pass their exams. The greatness of Dr. Archid bulur. ठीक है, अभी हमको पढ़ना है आज को एब्डोमेन. गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. पेज नंबर 142 से लेकर पेज नंबर 162, मतलब 20 पेज पढ़ना है ना. ठीक है. 142 इधर. हाँ ओके.
Yeah. Hmm. ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग, चीफ कंप्लेंट्स, abdominal distension, pedal edema, abdominal pain, nausea and vomiting, other symptoms, blood tinges or not, how many hours of consumption of the food, condition with nausea and vomiting, metabolic, neurologic, drug induced, psychogenic, other symptoms, जिसकी heartburn, hematemesis, melena, dysphagia, constipation, altered bowel, stool color, stool odor, stool frequency, blood tinges or melena, jaundice, itching and high colored urine, fever, weight loss, pain, halitosis, hiccups, other relevant past history of asthma, chronic obstructive tuberculosis, history of contact with tuberculosis, diabetes, mellitus, hypertension, ischemic heart disease, seizures, family history, personal history, bowel, bladder, appetite, loss of weight, occupational exposure, sleep, dietary habits and taboo, food allergies, smoking index or pack years, alcohol history. Uh, तो हमारे पास है ये सब कंपोनेंट्स, ठीक है। फिर अगर कोई महिला है तो मेंस्ट्रुअल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, जीपीएलए, एज ऑफ मेनोपॉज, फ्लो एंड देन समरी। उसके बाद है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऐसा देता है। तो जनरल एग्जामिनेशन आ जाएगा, पेशेंट का कॉन्शियसनेस, कोहेरेंट, कोऑपरेटिव एंड ओबेइंग कमांड्स। पेशेंट इज कॉन्शियस या फिर नहीं, कोहेरेंट, व्हाट डज इट मीन बाय कोहेरेंट? ओके, लेट्स सी। फिर बीएमआई वगैरह ले लेंगे। वाइटल्स में आ जाएगा पल्स, पल्स में आ जाएगा रेट, रिदम, वॉल्यूम, करेक्टर, वेजल्स वॉल थिकनिंग, रेडियो रेडियल डिले, रेडियो फीमोरल डिले, पेरिफेरल पल्सेस, ये सब चीज़ें। हेड टू टो में एलोपेशिया, फीटर हेपाटिकस, जॉन्डिस, कैरोटिड स्वेलिंग, गायनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी, लॉस ऑफ सिकनेस, सेक्सुअल कैरेक्टर, स्पाइरल, पल्मोनरी एडिमा, डिफरेंस कॉन्ट्रक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, xanthelasma, signs of chronic cholestasis. So these are all signs of हेपेटिक, chronic hepatic diseases. फिर आ जाएगा सिस्टमिक एग्जामिनेशन में, जहाँ पे इंस्पेक्शन, शेप, स्किन ओवर द एब्डोमेन, सिमेट्री अम्बिलिकस, मूवमेंट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्डर्स विद रेस्पिरेशन, डायलेटेड वेन्स, विजिबल माउथ, विजिबल पल्सेशन, विजिबल पेरिस्टासिस, स्कार्स और साइनसेस, डायवर्टिगेशन ऑफ द रेक्टल। पाल्पिटेशन में ये सब ठीक है। बाकी यहाँ से शुरू होता है ना, तो अब्डोमिनल स्वेलिंग, अब्डोमेन में स्वेलिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके पीछे का कारण क्या क्या और हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। जनरल एग्जामिनेशन में पहले हम लेंगे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि पल्स। तभी टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया कहाँ कहाँ हो सकता है। टैकीकार्डिया मीन्स हार्ट रेट इज फास्ट। नॉर्मली हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट, 70 to 80। अगर 120 140 बीट कर रहा है तो इसका एक रीज़न जो कि मोस्ट कॉमन इज अनीमिया एंड हाइपोवोलेमिया। ब्राडिकार्डिया इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हाई वॉल्यूम पल्स, हाई वॉल्यूम पल्स सिरोसिस ऑफ लिवर में देखा जाएगा। लो वॉल्यूम पल्स सेप्सिस में देखा जाएगा एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीड में देखा जाएगा। ओके, तो ये था पल्स के बारे में। इसके पीछे हैंड ओवर कर दिया गया। ओके, दिस विल सी लेटर, लेट्स फिनिश विद दिस थिंग। तो पल्स हमने देख लिया। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में वाइटल्स में पल्स, ब्लड प्रेशर, फीवर, पिकल, पैला, रेक्टल, साइनसिस, क्लबिंग, लिम्फोडेनोपैथी एंड पेडल एडेमा। तो ये सब तो जनरल एकदम मतलब फिंगर टिप से होना चाहिए। तो टैकीकार्डिया इज इन अनीमिया एंड हाइपोवोलेमिया, ब्रैडीकार्डिया इज इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हाई वॉल्यूम पल्स, हाई वॉल्यूम पल्स का मतलब क्या होगा, मतलब व्हेन यू फील द पल्स you can feel that there is too much of pulsation. Is that so? Like, how do you generally differentiate between a pulse and high volume pulse? I need to know this. Where is this one? आज हमने क्लास में क्या क्या करा था?
कल से शुरू होता ना kerosene poisoning, arterial versus venous ulcers, infective hepatitis, pelvic fracture dangers, pediatrics को sort out करना होगा. Anyways, okay. Tell me the difference between a regular pulse and a high volume pulse, and how does it feel on a patient? Let's go. So regular pulse versus high volume pulse. ठीक है, तो जो रेगुलर पल्स है, अगर मैं अपना पल्स देखूंगा तो I can feel my pulse. It is like normal, which I usually feel when I check pulse of my friends, because they all are normal. Now when I check for high volume pulse, what should I feel? So the definition is the amplitude of the pulse is increased. The arterial pressure rises higher during systole, so the pulse strikes your finger more forcefully. Yeah, that is what जो मुझे समझ में आ रहा है ना, common sense. High volume pulse is nothing but when you see the pulse का जो हमारा ग्राफ किधर है, जुगुलर JVP, where is pulse. हाँ, so we have pulse का नॉर्मल जो वेव होता है, that has certain characteristics. So एक आर्टरी का पल्स, उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक तो आ जाएगा मेरा फॉरवर्ड परकशन वेव, दूसरा आ जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड वेव, तीसरा आ जाएगा मेरा सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको ऑगमेंटेशन प्रेशर भी कहा जाता है, एंड देन देयर इज डायक्रोटिक नॉच. ठीक है, सो इफ आई गो लाइक दिस, कौन सा कंपोनेंट हमें बढ़ जाएगा? द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स इज इंक्रीज, द आर्टियल प्रेशर राइजेस हायर ड्यूरिंग सिस्टोल मतलब जब मेरा हार्ट, the ventricles of the heart is during systole, at that point वो जो pulse wave है, pulse pressure है, that will travel from the aorta till the peripheral arteries, and वो जो wave है, that amplitude of the wave will be raised. ये जो diagram है मुझे सीखना पड़ेगा so that I don't forget. So we have one uprising graph, then there is something like this, and then again one uprising graph, then it comes down this way, and then there is a dichotic notch, and then it goes something like that. So this is a basic pulse wave. Now the pulse pressure from this point to this point is pulse pressure. Okay, if I have to show you guys what I am reading, then I need to open the PDF. I hope I have the PDF. Archie Blue है ना? Archie. उसमें होगा ना, किसमें रखा है मैंने? Where is drive?
medicine, orchid blue. Strong growth. What the fuck? 700 ml. ये तो नया वाला हुआ ना ये। This one fine. Okay. Sorted origin
The abdomen is divided into 9 quadrants. The upper 3 quadrants are called as two hypochondrium and one epigastric. So, what is the meaning of hypochondrium? Hypo is below, chondrium is cartilage, specifically the costal cartilage. Yeah, that's all. That's all. That's all. That's all. That's all. Right hypochondrium, epigastrium, left hypochondrium. सबकोस्टल प्लेन वहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन. राइट आइलियक फोसा, लेफ्ट आइलियक फोसा, मिड क्लाविकुलर लाइन वहाँ पे आ जाएगा. दैट इज लेफ्ट लंबार, right lumbar. Okay, and that is umbilical. Got it. Now, planes and 9 areas of the abdomen. ये तो हो गया. तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया गया है पहले तो. Firstly, findings normal. Gentle rise in the abdominal wall during inspiration and a fall during expiration. तो तुम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में सुला के क्या फाइंड आउट कर रहे होगे. Gentle rise in the abdominal wall and that is during inspiration and fall during expiration. Okay. इंस्पिरेशन के टाइम पे जनरली थोड़ा सा अपडाउन राइज होगा एंड एक्सपिरेशन के टाइम पे वो फिर से फॉल होगा. करस्पॉन्डिंग एरियाज मूव इक्वली ऑन बोथ द साइड्स. तो या रेस्पिरेशन के टाइम पे अपडाउन और चेस्ट दोनों के दोनों इक्वली ऊपर जाना चाहिए, इक्वली नीचे आना चाहिए. सो दैट इज देयर. तो अदर यू से अपडाउन और अदर यू से द चेस्ट पार्ट, both of them in normal cases they should be equal uprise and equal down what is it, fall during the expiration. Okay. Corresponding areas move equally. Diminished or absent movement. अगर कहीं पे भी diminished movement है या फिर movement absent है during the respiration, तब क्या होगा. That is maybe because of the generalized peritonitis. Okay, the still silent abdomen. Diminished or absent movement peritonitis में होगा. पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी. पेरिटोनियम कैविटी में जो भी लाइनिंग किया गया है उस कैविटी में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसकी वजह से तो रिजिडिटी भी होगा, गार्डिंग भी होगा एंड डिक्रीज्ड मूवमेंट इन द abdomen during inspiration and expiration. Okay. Visible peristalsis. Site of obstruction, site of peristalsis, site of obstruction में obstruction at the pylorus, obstruction in the distal small bowel. तो पेरिस्टल्सिस अगर मुझे दिख रहा है एक किसी एक इंसान के पेट के अंदर तो उसके दो कारण हो सकते हैं मेनली. अगर ऑब्स्ट्रक्शन दी पाइलोरस पे, स्टमक के बाद में जो पाइलोरस आता है वहाँ पे अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसकी वजह से जो फूड कंटेंट है स्टमक से फर्दर पाइलोरस के अंदर नहीं घुस पाएगा. तो पेरिस्टल्सिस फ्रॉम लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन टू राइट, लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन टू राइट, ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्टल स्मॉल बाउल, राइट टू लेफ्ट, right to left, irregular pattern, obstruction in the distal small bowel. Okay, got it. तो अगर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है अगर मेरे लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो अगर मुझे विजिबल पेरिस्टाल्सिस दिख रहा है पेशेंट के अंदर, विजिबल पेरिस्टाल्सिस के का मतलब क्या होता है, उसके पेट के यहाँ पे इधर आई कैन सी दैट द इंटेस्टाइन इज मूविंग. खाना खाने के बाद जैसे इंटेस्टाइन को मूव होना पड़ता है. सो व्हाई इज दैट. एक कारण है कि स्टमक के बाद जो पाइलोरस है वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है
बिकॉज ऑफ दैट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है मुझे दिखेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर कोई डिस्टल इंटेस्टाइन पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जहाँ पे मुझे पेरिस्टाल्सिस दिखेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके, और irregular pattern, so there is obstruction in the distal small bowel. Now visible mass demonstrates the underlying intra-abdominal structures with respective to the regions. Visible mass, divarication of the recti, diastasis of the recti. It is a gap between the rectus abdominis muscle, which becomes prominent on straining. Make the patient lie supine and tense the abdominal muscle by lifting the head. A midline defect can be seen and felt. It is common after postpartum and also can be seen in tensed ascites. तो पर यहाँ पे मैं देखूँ, दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एरिया। सो भी वो तो ठीक ही है, मतलब क्या है ये, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में मेरे को लिवर दिखेगा, गॉल ब्लैडर दिखेगा, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, एपिगैस्ट्रिक में स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, डिओडिनम, स्प्लीन एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। व्हाट द फक, एड्रिनल ग्लैंड्स भाई वहाँ पे कहाँ से आएगा एड्रिनल ग्लैंड्स? हाउ द फक इज एपिगैस्ट्रिक रीजन में एड्रिनल ग्लैंड है? यहाँ पे आएगा क्या एड्रिनल ग्लैंड? Divertication of the recti. So this is the divertication of the recti. Abdominal strap muscle divertication, मतलब ये जो मसल है, दिस मसल इज कॉल्ड एज रेक्टस abdominis. इस मसल का नाम होता है रेक्टस abdominis. तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो रेक्टस abdominis है जनरली ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे सेपरेट हो गया बीच में का है ना, जो डाइवर, इसको बोला जाता है डाइवेरिकेशन. तो डाइवेरिकेशन ऑफ द रेक्टाई ये क्यों होता है? तो इट इज अ गैप बिटवीन द रेक्टस मसल विच बिकम्स प्रोमिनेंट ऑन स्ट्रेनिंग. अगर तुम ज़्यादा स्ट्रेन करोगे तो वो हो सकता है, मतलब सेपरेशन हो सकता है. मेक द पेशेंट लाई सुपाइन पोजिशन एंड टेंस द एब्डोमिनल मसल बाय लिफ्टिंग द हेड. ए मिडलाइन डिफेक्ट कैन बी सीन एंड फेल्ट. इट इज़ कॉमन आफ्टर पोस्टपार्टम. पोस्टपार्टम पे कॉमन है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, क्योंकि इतना स्ट्रेच इतना ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है ना एब्डोमेन के ऊपर, जो कि जो मसल है रेक्टस मसल, इसको ये कर देता है, लूजन अप कर देता है, लूजन अप. ठीक है. हु इज दिस गाय? Midline defect suggestive of divarication of the recti on asking the patient to raise the head of the bed. Also patient has umbilical hernia. बाप रे बाप. इसको ascites है, इसको umbilical hernia है, और इसको रेक्टस मसल डाइवेरिकेशन भी है. तीनों के तीनों भी है. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट माय इंस्पेक्शन. तो इंस्पेक्शन में मुझे ये सब देखना पड़ेगा. ऑलराइट. नेक्स्ट लेट्स कम टू ऑस्कल्टेशन. ऑस्कल्टेशन मीन्स सुनना, अपने कानों से सुनना कि क्या हो रहा है पेट के अंदर, आई मीन एब्डोमेन के अंदर. Note that the abdomen should be auscultated prior to palpation. Auscultate in all four quadrants of the abdomen. Bowel sounds, bruit, venous hum, rubs, succession splash. In all the four quadrants. और यहाँ पे मेरे को ये कुछ साउंड्स के नाम है जो मुझे याद करना पड़ेगा, जिसमें है 5. बावल साउंड्स, ब्रूई, venous hum, rubs, successional splash. Bowel sounds, bruit, venous hum, rub, succession splash. क्या बावल साउंड तो मुझे पता है, ब्रूई भी मुझे पता है, वेनस हम भी मुझे पता है. आई डोंट नो रब्स, क्योंकि रब्स जनरली तुम्हारा प्लूरल रब होता है, जो कि इसमें आता है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी में आता है. बट हियर आई हैव नॉट सो मच क्लियर. सक्सेशन स्प्लैश इज a new term for me. Succession splash.
तो बाउल साउंड में आते हैं। पहले बाउल साउंड में क्या क्या साउंड होगा, क्या सुनाई देगा। एक है इंक्रीस्ड और एक है डिक्रीस्ड। अगर बाउल साउंड ज़्यादा इंक्रीस्ड हो गया, जिसको बोला जाता है बॉर्बोरी, बॉर्बोरिगमस, 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 जिस जो कि 7 मिनट से लेके आधे घंटे में एक बार सुना देता है, बॉर्बोरिगमस। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, डायरिया, लैक्सेटिव यूज, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, मैसिव जीआई ब्लीड, तो इन सब में मेरे को बॉर्बोरिगमस साउंड सुनाई देगा। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, जीआई ब्लीड, कार्सिनोमा, कार्सिनॉइड सिंड्रोम, laxative use, diarrhea, laxative use and diarrhea. Decreased paralytic ileus or peritonitis, paralytic ileus and peritonitis, यहाँ पे डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, यहाँ पे मेरा डिक्रीज होगा ये साउंड, बाउल साउंड। ओके, लेट्स गो। ब्रूई, रीनल आर्टरी ब्रूई, abdominal aorta, हेपेटिक ब्रूई, इलियक ब्रूई। तो ये 4 टाइप की ब्रूई मुझे पता होना चाहिए। बाउल साउंड में क्या था, बाउल साउंड में या तो बाउल साउंड इंक्रीज हो रहा है या फिर बाउल साउंड डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज बॉर्बोरिगमस साउंड। एंड किस किस सिचुएशन में इंक्रीज होता है, if there is intestinal obstruction, if there is massive GI bleed, if there is carcinoid syndrome, and what else, अगर डायरिया होगा, अगर लैक्सेटिव यूज किया जाएगा, तो इन दिस ऑल दिस केसेस देयर इज बॉर्बोरिगमस साउंड व्हिच इज नथिंग बट इंक्रीज्ड बाउल साउंड। एट द सेम टाइम अगर डिक्रीज्ड बाउल साउंड होगा तो कैसे, मतलब किस किस सिचुएशन में डिक्रीज्ड बाउल साउंड सुनाई देगा, डिक्रीज बाउल साउंड सुना जाएगा। वेयर पैरालिटिक, पैरालिटिक इलियस एंड पेरिटोनाइटिस, पैरालिटिक इलियस, पैरालिटिक इलियस एंड पेरिटोनाइटिस। पैरालिटिक इलियस मतलब क्या है, आइलियम, इलियस, इलियस जो है कि पैरालिसिस हो चुका है। लहो हमारो ब्रूई, ब्रूई, ब्रूई। अरे यार ये क्यों मेरे सिर के ऊपर ऐसा है, इसको नीचे रखो। ओके, ब्रूई, renal artery bruit 2.5 centimeter above and lateral to the umbilicus, 2.5 centimeter above and lateral to the umbilicus। ये मेरा umbilicus है। 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, lateral जाओ, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इन ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक, पाइलोरस हमारा यहाँ पे है, तो राइट साइड पे है रीनल आर्टरी ब्रूई। फिर आ जाते हैं मेरा अब्डोमिनल आयोटा। अब्डोमिनल आयोटा में एपिगैस्ट्रियम, एपिगैस्ट्रियम इन आयोटिक एन्यूरिज्म और आयोटो आर्टेराइटिस। वाह, ठीक है। हेपेटिक ब्रूई, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एक्यूट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हेमांजियोमा। आइलियक ब्रूई 2.5 सेंटीमीटर बिलो एंड लैटरल टू द अम्बिलिकस। तो रीनल आर्टरी ब्रूई मुझे ऊपर अम्बिलिकस के 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एंड लैटरल मिलेगा, एंड आइलियक ब्रूई मुझे अम्बिलिकस के 2.5 सेंटीमीटर नीचे एंड लैटरल में मिलेगा। अब्डोमिनल आयोटा, एपिगैस्ट्रियम, इन एपिगैस्ट्रम यहाँ पे सुना देगा, लेकिन किस कंडीशन में, एक तो अगर आयोटिक एन्यूरिज्म है या फिर आयोटो आर्टेराइटिस, ये चीज़, ये दो चीज़ में, ठीक है, आयोटिक एन्यूरिज्म एंड आयोटो आर्टेराइटिस। हेपेटिक ब्रूई हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में सुना देगा, अल्कोहलिक
हेपेटाइटिस में एंड हेमांजियोमा में, याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं वीनस हम में। वीनस हम करवेलहर बाउग बाउंगार्ड, क्या है करवेलहर बाउंगार्टन मर्मर, करवेलहर बाउमर, अबे बाउंगार्टन बाउंग, अबे what is this pronunciation, bro? Cavalier Baumgarten Murmur. Cavalier, can you guys see? Cavalier Baumgarten Murmur. It is a continuous murmur produced due to the opening of the paraumbilical vein in the falciform ligament. Okay, so here is my patient. So the doctor is doing auscultation of the bowel sound, that is different thing. ये तो हमने देख लिया ना। और यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व तो बॉल मूवमेंट इन्होंने, ये जो है ऑस्कुलेशन बॉल मूवमेंट, दिस इज आई गेस ट्रांस इलियक इलियक ब्री, क्योंकि वो अम्बलिकस अगर यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर नीचे एंड लैटरली यहाँ पे ही होगा. So he is using his diaphragm to listen, but in these photos he is using his this one bell to listen. So this is the renal artery. renal artery कहाँ पे होगा मेरा 2 सेंटीमीटर अम्बिलिकस से ऊंचा और उसके लैटरली, तो यहाँ पे या फिर वहाँ पे भी हो सकता है. सो renal artery blue ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, अगर ट्रांसपाइलोरिक स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है तो दिस शुड बी ऑन द राइट साइड मोस्टली. एंड इलियक ब्रूई 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे. abdominal aorta ब्रूई इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो तुम सीधा एपिगैस्ट्रिक रीजन पे चले आओ, दैट इज नथिंग बट दिस एरिया जहाँ पे तुमको abdominal aorta ब्रूई सुना देगा. बट कब सुना देगा? अगर abdominal aorta का अन्यूरिज्म हो रहा है या फिर aorta arteritis हो रहा है तब. And then we have the Curvilier Baumgarten murmur. Fucking bitch. It is a continuous murmur produced due to the opening of the paraumbilical vein. ये continuous murmur है और कब सुना जाएगा है? Produced due to the opening of the paraumbilical veins in the falciform ligament. falciform ligament मेरा अटैच होता है लीवर से. Continuous murmur produced due to the opening of the paraumbilical vein in the falciform ligament. It is heard midway between the xiphisternum and umbilicus. It is heard midway between xiphisternum and umbilicus on the right side of the epigastrium. ठीक है. A patent umbilical vein excludes an extrahepatic cause. A patent umbilical vein excludes an extrahepatic cause of portal happening.
Succession splash. Palpation. There is still too much. Still इतना सारा है. How much is this? 184. Where are we? 167. That means almost around 4 plus and 14 and 17 page more. Ooh, guys, what's up? We'll continue. Yeah, mask pain दे रहा है मेरे कानों को. It is starting to pain. Palpation and percussion of the abdomen. The following scheme is searched for the palpation. So start in the left lower quadrant. Palpate अगर करना है मुझे left lower quadrant से शुरू करना होगा. Left lower quadrant. हाँ, यहाँ से मुझे पूरे quadrant पे आना है ना. Start in the left lower quadrant of the abdomen and repeat it in all the quadrants as described below. Palpate lightly initially, followed by deep palpation. तो feel for the left kidney. पहले तो left kidney, लेकिन लेफ्ट किडनी यहाँ से कहाँ मिलेगा भाई, तेरे को पीछे से जाना पड़ेगा ना. फील द लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, राइट किडनी, लिवर, aorta, parietic glands, common femoral vessels, urinary bladder, both the groins, external genitalia. Left kidney, spleen, right kidney, liver, aorta, parietic glands, common femoral vessels, urinary bladder, both the groins and external genitalia. External genitalia is the last. Examination of the individual organs. Examination of the liver. Location: right hypochondriac region, epigastric region, and left right hypochondriac ना, तो यहाँ पे epigastric and left hypochondriac region. तो यहाँ पे है मेरा liver. Extent: upper border. जो liver का मेरा upper border है वो almost at the 6th rib पे होता है, anteriorly 6th rib के वहाँ पे आसपास, ठीक है. Inferior border होता है across the midline at the level of the transpyloric plane. At the level of the L1 vertebra, L1 lumbar 1, after transpyloric.
जो मैं सोच रहा था वही है. Transpyloric is this only. It goes around. See, this is the transpyloric. अपर बॉर्डर मेरा 6th रिप पे वहाँ पे आसपास होगा. इंफीरियर बॉर्डर मेरा crosses the midline at the level of the transpyloric plane. Inspection. Watch for the fullness in the right hypochondrium, epigastrium, and represents the flow. Direction of the enlargement is towards the right iliac fossa. ठीक है. Palpation. Following methods of palpation have been discussed: traditional method, conventional method, preferred method, alternate method, hooking method, dipping method. 5 मेथड है. ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल जो भी किया जाता है, जो कि सालों साल से करते हुए हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, दैट इज द कन्वेंशनल और द ट्रेडिशनल मेथड. फिर हमारे पास है कुछ प्रेफर्ड मेथड जो कि प्रेफर किया जाता है. देन हमारे पास है कुछ अल्टरनेटिव मेथड, हुक्ड मेथड एंड डिपिंग मेथड. Traditional, preferred, alternate, hooking and dipping method. So these are the palpation के methods. Now traditional method for और the conventional method. यहाँ पे क्या होगा? Place right hand on the left right iliac fossa. तो हम ऐसे जाएंगे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे. तो यहाँ पे फील होगा हमको, यहाँ पे, यहाँ दिस पार्ट, यहाँ पे हमको क्या फील होगा? यहाँ पे हमको लिवर फील होगा. लिवर को बॉर्डर, लिवर का लोअर बॉर्डर हमको फील होगा. लिवर का लोअर बॉर्डर अगर वो एनलार्ज्ड है तो, एनलार्ज मतलब अगर फूल गया होगा तो. ठीक है. दे प्लेस द राइट हैंड ऑन द राइट iliac fossa parallel to the costal margin. Keep the hand steady during inspiration and feel for the liver edge as it descends with each inspiration. तो हम उसको इंस्पायर करने बोलेंगे. इफ एज इज नॉट फेल्ट मूव द हैंड अपवर्ड्स टुवर्ड्स द कॉस्टल मार्जिन बाय 1 सेंटीमीटर ड्यूरिंग एक्सपीरेशन. तो जब इंस्पिरेशन पे होगा तब हमको प्रेस करना है नीचे, जब एक्सपायर करेगा तब हमको सामने मूव करना है. ठीक है. रिपीट द प्रोसीजर टिल द लिवर बॉर्डर इज फेल्ट. डन. प्रिफर्ड मेथड, तो दैट वाज द कन्वेंशनल मेथड. ना प्रिफर्ड मेथड क्या है? प्रिफर्ड मेथड यहाँ पे जैसे कि दोनों हाथों से यूज किया जाता है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ एक ही हाथ यूज किया जा रहा है, यहाँ पे दोनों हाथ यूज किया जाएगा और ऐसे प्रेस किया. लेकिन दिस इज योर डीप पाल्पेशन ब्रो, दिस इज नॉट योर. हाँ, हम तो डीप पाल्पेशन ही कर रहे हैं ना इन एग्जामिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन्स. So sit on the right side of the patient facing the head end of the patient. Now place both the hands side by side flat on the abdomen in the right subcostal region. तो मैंने दोनों हाथ रखा और साइड बाय साइड वो भी on the right subcostal region. ठीक है. lateral to the rectals with the finger pointing towards the rib. Finger should be pointing towards the rib. Okay. If resistance is felt, move the hands further down until the resistance disappears. ठीक है. Exert gentle pressure and ask the patient to inspire deeply. Okay. The border of the liver can be felt on the tip of the finger. The border of the liver can be felt on the tip of the fingers. This procedure can be repeated from lateral to medial to trace the entire edge of the liver. Okay. Got it. So in the preferred method, we use two hands side by side, parallel, and we go deep while the patient is inspiring. And if we find any resistance, then we will come down and see where the resistance is lost. And yeah, so if we find the resistance, that means there is liver under that. Now if I want, I can also trace the entire length of the liver with this method. Okay. Now what is alternate method? Place the right hand below and parallel to the right subcostal margin. Place the right hand below. ठीक है. तो राइट हैंड को मुझे प्लेस करना है बिलो, पैरेलल टू द राइट सबकॉस्टल मार्जिन. द लिवर एज विल देन बी फेल्ट अगेंस्ट द रेडियल बॉर्डर ऑफ द इंडेक्स फिंगर. अगेंस्ट द रेडियल बॉर्डर ऑफ द इंडेक्स फिंगर. But how the fuck is this different from the conventional method?
Hooking method of liver examination. Examiner stands on the patient's right shoulder facing the foot. तो यहाँ पे वो जो एग्जामिनर सॉरी द हाँ द डॉक्टर द एग्जामिनर इज स्टैंडिंग looking at the foot क्योंकि वो सब पीछे घूम के हुआ है ना. Now he will hook. So examiner stands at the patient's right shoulder facing the foot and examines the lower edge of the liver by curling the fingertips. Curling the fingertips downwards, the right costal margin. Okay. So this one. This is the hooking method. Where you go hook like this and you go like this. Dipping method of the liver palpation in ascites. Place both the hands one over the other over the area to be palpated. Rapidly flex your metacarpopharyngeal joints. Oh. So that your fingers suddenly dip into the patient's abdomen. This displaces the fluid, enhancing the palpation. We have the picture? Yeah. So this is our dipping method of the liver palpation. तो लिवर पालपेट वगैरह करके फायदा क्या है इसका, मतलब क्या करना है हमको इसका. Then we have something called as liver span. The liver span is the distance in centimeters. So this is nothing but the distance in what? Distance in centimeters. कि कितना डिस्टेंस है लिवर का ऊपर से नीचे तक. अगर हमको डिस्टेंस पता चल गया and if you can compare this data to the what normal is, then we can find out whether the liver is shrunken or if the liver is enlarged. The liver span is distance in centimeters between the upper part of the liver and the right midclavicular line as determined by percussion, where lung resonance changes to liver dullness, and the lower borders as determined by pressure, either pressure, percussion or palpation. The lower border as determined by the percussion or palpation. So the upper part of the liver is assessed using a heavy percussion technique. Light percussion is used to locate the lower edge of the liver. Light percussion is required because heavy percussion may underestimate the lower extent of the liver border. Oh. The normal liver span is less than 13 centimeter. Normally liver का जो span है वो less than 13 centimeter होता है. The midclavicular line normally 6 to 12 centimeter. In midsternal line it is around 4 to 8 centimeter. ठीक है, तो 13 से ज़्यादा एक्चुअल है. 6 to 12 सेंटीमीटर अगर मतलब इस पे चेक किया जा रहा है तो मिड क्लाविकुलर लाइन वहाँ पे एंड मिड स्टर्नल लाइन पे 4 to 8 centimeter. The clinical estimate of the liver span is usually an underestimation of the actual liver size by about 2 to 5 centimeter. There are several problems with predicting liver size with percussion. If ascites is present, the examiner can only speculate about the correct size of the liver. A more common cause of overestimating liver size, false positive measurements, is some form of chronic obstructive lung disease. Oh, this makes the percussion of the upper part of the liver difficult. हाँ, अगर लंग में भी कोई फाइब्रोसिस हो गया तो जिसकी वजह से जब मैं परकस करूँगा लंग के उस टिश्यू के ऊपर तब मुझे डल सुना जाएगा इंस्टेड ऑफ रेजोनेंस. तब क्या करेंगे? Can you guys see my red eyes? The eyes are red due to lack of sleep. इतना ज़्यादा नींद आ रहा है ना मेरे को भी. See, can you see my red eyes? See, it is almost red. So this is my liver span. तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर मेरा यहाँ पे lungs होगा मैं दिखाता. So if my this is my trachea, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसा दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जा रहा है. If you guys can see, I don't know. And then here is my lungs.
something like that. Here is my lungs, something like that. Okay. तो यहाँ पे अगर मैं परकस करना शुरू करूँगा तो यहाँ पे मुझे दिखेगा रेजोनेंस, 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 रेजोनेंस। जब यहाँ पे देखो डल, डल साउंड सुना जाएगा यहाँ पे डल। तो यहाँ जहाँ से मेरा डल साउंड सुनाई दे रहा है, डल 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 टिम्पैनिक, क्योंकि यहाँ पे फिर से खाली जगह, नॉट खाली जगह, कुछ तो टिश्यू है बट इट इज टिम्पैनिक। सो यहाँ पे मुझे फिर टिम्पैनिक सुनाई देगा अंटिल दैट यहाँ तक मुझे डल सुनाई देगा, यहाँ से मुझे डल सुनाई देगा। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज लिवर स्पैन। Okay, so yeah, this is how he is trying to mark percus along the midclavicular line. So if this is my clavicle, which is my clavicle? This is my xiphisternum. How is my xiphisternum? Xiphisternum is something like this. And here is my clavicle, something like this. My bone, clavicle bone. Okay. So this is my midclavicular line. Ticky 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 ticky, something like this. So he is percussing along my midclavicular line. Okay. Yeah. So this is my midclavicular line. Next. तो लिवर स्पैम जनरली कितना होता है? लिवर स्पैम नॉर्मली 13 सेंटीमीटर से कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम मिड क्लाविकुलर लाइन के अलोंग देखोगे तो 12 सेंटीमीटर तक चल नॉर्मल है, 6 से 12 सेंटीमीटर तक नॉर्मल है, 6 से 12। मिड स्टर्नल लाइन पे तुम देखो मिड स्टर्नल लाइन, तो वहाँ पे 4 से 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके। Obesity in the patient can cause problem in the body, both percussion and palpation. Distension in the colon may obscure the lower liver lenses. Okay. लिवर स्पैन कहाँ पे इंक्रीज होता है? हेपेटोमेगाली में इंक्रीज होता है ऑब्वियसली। डिक्रीज्ड शंकर लिवर इन सिरोसिस। फॉल्स पॉजिटिव फॉर इनलॉज्ड लिवर। फॉल्स पॉजिटिव फॉर इनलॉज्ड लिवर कब दिखाई देगा? तब जब मेरे लंग्स पे कोई फाइब्रोसिस दिखाई देगा। सो राइट साइड प्लेवरल एफ्यूजन, राइट लोअर लोब कंसल्टेशन। In a condition like emphysema of the lung, the liver may be pushed down. Emphysema में liver push down होगा, and the edge may be palpable, leading the examiner to believe that the patient has hepatomegaly, when the real problem is hyperinflated lungs. Percussion will relieve that the upper border is located lower than the expected. अच्छा, हाँ तो वही है ना, अगर एम्फाइसीमा है जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेमेशन, सॉरी नॉट इन्फ्लेमेशन, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स है, तो इस हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से जो मेरा लीवर है वो नीचे पुश हो गया है। नाउ ड्यू टू दिस रीजन अगर कोई भी नूब डॉक्टर होगा तो उसको लगेगा कि अरे लीवर तो इनलार्ज्ड है, बिकॉज ये बहुत नीचे तक मुझे बॉर्डर उसका दिखाई दे रहा है। सो दिस इज हाउ ए नूब डॉक्टर विल थिंक, बट ए प्रो डॉक्टर विल डू व्हाट? ए प्रो डॉक्टर will percuss the lung area and try to find out if there is pathology in the liver or the lungs, क्योंकि अगर लंग्स की वजह से लिवर पुश डाउन हो गया है तो उसका जो अपर बॉर्डर है वो भी पुश डाउन हो गया होगा, एंड जो लोअर बॉर्डर है वो तो है ही है, एंड लिवर स्पैन से पता चल जाएगा उसमें, है ना। सो दैट इज इट। If the liver is enlarged and palpable, assess the following: location of the edge in centimeter below the costal margin, in the midclavicular line or anterior axillary line, span, tenderness.
तो अगर लिवर एनलार्ज्ड है एंड पैल्पेबल है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो लोकेशन ऑफ द एज और इन सेंटीमीटर बिलो द कॉस्टल मार्जिन से कितना नीचे है वो मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा। स्पैन कितना है वो मुझे नोट डाउन करना पड़ेगा, और टेंडरनेस है या नहीं है वो मुझे देखना पड़ेगा। नाउ टेंडर अगर है, टेंडर मतलब क्या होता है? अगर मैंने उसके राइट साइड पे जहाँ पे उसका लिवर है, अगर मैंने ऐसा प्रेस किया थोड़ा सा या फिर उसको वहाँ पे छुआ मैंने, तो वहाँ पे उसको पेन होगा थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड टेंडर। तो टेंडर हेपाटोमेगाली और पेनलेस हेपाटोमेगाली कहाँ पे क्या होता है? तो टेंडरनेस कहाँ पे होता है? राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर में टेंडरनेस होगा। एक्यूट हेपेटाइटिस ठीक है, लिवर एब्सेस ठीक है, हेपाटोमा ठीक है, इन्फार्क्ट ठीक है, एक्टिनोमाइसिस सॉरी एक्टिनोमाइसिस एक्टिनोमाइकोसिस तो ये फंगस, इसको कब बोला मैंने? एक्यूट बुट चायरी सिंड्रोम। Right heart failure, acute hepatitis, liver abscess, hepatoma, infarct, actinomycosis, acute Budd-Chiari syndrome. Okay, some bullshit they have given now. Want to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I am getting Dr. Akshay Rao. Oh yes. I hope I get Akshay Rao sir. I don't want Divya. I don't want Dr. Divya. Suhel sir is also okay. Akshay Rao sir is also okay. Dr. Vishwanath, फिर नागेश सर, फिर श्रीकांत, अश्विन सर, वेंकटेश सर, सुहेल, संदीप, श्वेता, असलाम सर, विजयश्री सर, ठीक है इतना ही है ना। एन पोस्टिंग जनरल मेडिसिन क्लिनिक्स कॉमन मैलिग्नेंसीज 13 को है एन पोस्टिंग इंटरनल असेसमेंट ऑस्की, एन पोस्टिंग्स इंटरनल असेसमेंट ऑस्की। तो पहले दिन तो डॉक्टर असलाम सर है, डॉक्टर दिव्या है, जो कि पहले रोल नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हाफ 13 जिसमें आ जाएगा 12 6 है। फिर आ जाएगा डॉक्टर विजयश्री, डॉक्टर अश्विन सर। जो तीन में डिवाइड कर दिया गया, डॉक्टर विश्वनाथ और डॉक्टर नागेश। चार दिन का है असेसमेंट, 3 दिन में डिवाइड कर दिया गया। टोटल हुआ 39, 13 3 39। तो 13 ऐसा आएगा है ना। फर्स्ट 13 को वो लेंगे, फिर दूसरे 13 को वो लेंगे 26, एंड फिर लास्ट 13 वो लेंगे। ठीक है, तो मतलब अश्विन
आंसर हमको मिल जाए भाई, विजयश्री नहीं चाहिए। नेक्स्ट 13 है ना, फर्स्ट 13, 13, 13, सो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, व्हाट द फक। फर्स्ट 6 विजयश्री मैम के पास जाए, फिर 7 अश्विन सर के पास जाए। आई होप सो, आई डोंट। Okay, so where we were. My ear is seriously hurting. Huh? तो हम थे यहाँ पे ना, टेंडर हेपाटोमेगाली और पेनलेस हेपाटोमेगाली कहाँ पे होता है? तो टेंडर होता है जहाँ पे राइट हार्ट फेलियर होगा, एक्यूट हेपाटाइटिस, लिवर एब्सेस, हेपाटोमा, इन्फ्लॉक्स, एक्टिनोमाइकोसिस एंड बुच्चाइड सिंड्रोम। पेनलेस फैटी लिवर, इन्फिल्ट्रेटिव एंड स्टोरेज डिसऑर्डर्स, मलेरिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। मलेरिया में टेंडरनेस नहीं होगा। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, फैटी लिवर, इन्फिल्ट्रेटिव एंड स्टोरेज डिसऑर्डर्स। स्टोरेज डिसऑर्डर्स में क्या क्या आ जाएगा? स्टोरेज डिसऑर्डर्स में मेरे पास आ जाएगा गॉशर्स डिसीज, देन नीमेनपिक डिसीज, पॉम्पेस डिसीज, गैलेक्टोसीमिया, what else? This one, hemochromatoses, विल्सन्स डिसीज। नहीं, ये तो इन्फिल्ट्रेटिव में आ जाएगा ना। what else? That's all. मलेरिया, मलेरिया में पेनलेस होगा क्या हेपाटोमेगाली? ल्यूकेमिया में पेनलेस होगा, ओके। लिम्फोमा में भी पेनलेस होगा, फैटी लिवर में पेनलेस होगा, इन्फिल्ट्रेटिव में ठीक है, और पेनफुल होगा राइट हार्ट फेलियर। क्यों? इफ दिस इज माय हार्ट, ठीक है, लेट मी ड्रॉ ए प्रॉपर हार्ट। अबे तेरी तो it goes like this and like this and like this and like this. No. Okay, now if this is like this is my right side. If my right heart is failing, तो यहाँ से और यहाँ से खून नहीं जाएगा। खून नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? राइट साइड के हार्ट पे नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि यहाँ से बैक फ्लो होगा, यहाँ से भी बैक फ्लो होगा। यहाँ से बैक फ्लो होके क्या होगा? यहाँ पे है मेरा लीवर,
और यहाँ पे है मेरा पोर्टल सिस्टम. सो दिस इज माई पोर्टल सिस्टम, जहाँ पे दिस इज कॉल्ड माई, व्हाट इज दैट, पोर्टल विनस और व्हाट इज दैट, समथिंग. तो यहाँ से खून, एक्चुअली इसके अंदर ऐसा खून जाके यहाँ से इसके अंदर ऐसे जाता है. ठीक है. तो यहाँ से बैक फ्लो होगा. बैक फ्लो होने के बाद यहाँ पे तो कंजेशन होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह होगा, जिसकी वजह से लिवर का पैरेंटकमा धीरे धीरे मरने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंडरनेस होगा, टेंडरनेस. सो राइट हार्ट फेलियर, एक्यूट हेपेटाइटिस, लिवर एब्सेस. लिवर एब्सेस क्या होता है? लिवर के अंदर एक फोड़ा हो गया, फोड़ा, वूंड. और लिवर एब्सेस किससे होता है? लिवर एब्सेस होता है एंटामेबा हिस्टोलिटिका. ठीक है, एंटामेबा हिस्टोलिटिका, amoebic amoebic liver disease. Yeah. Hepatoma is nothing but carcinoma, cancer of the liver. इनफैक्ट्स मतलब सेलुलर नेक्रोसिस, क्योंकि वहाँ पे कोई ब्लड वेसल अगर ये नहीं हो रहा. एक्टिनोमाइकोसिस इज ए फंगल डिसीज. बुट-चायरी syndrome. Butt-Chiari syndrome is nothing but, I guess, this is arteriovenous malformation, है ना? What is Butt-Chiari syndrome actually? AV malformation. Butt-Chiari, 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 Butt-Chiari. Butt-Chiari syndrome, AV malformation. I hope so. Rare condition characterized by the obstruction of the hepatic venous outflow leading to liver congestion. Blockage of the hepatic veins which carry blood away from the liver. This obstruction can be partial or complete. May result from various causes including blood clots, inflammation, external compression, वगैरह वगैरह. So generally there is there is compression. I mean obstruction. So this is my hepatic venous congestion. Okay, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है. बुट-चायरी. पोर्टल वेन, inferior vena cava, it's going like this. From here it is getting metabolized, it's going Butt-Chiari syndrome. So where is the pathology actually? Now, in continuing with our online radiology teaching series that we run on DAM's Ready channel on YouTube. Now, today I'll present an interesting case of Butt-Chiari syndrome to you. In this, I'll discuss the case as a spotter. Sometimes you get this as an image in your exams. Sometimes they ask you the keywords in an MCQ-based exam. We need to understand how to identify this disease on a CT scan. We know Butt-Chiari syndrome is due to occlusion of the hepatic veins, could be because of thrombosis, or could be because of a membrane occluding the vein. And how do we actually identify this? Now, key anatomical thing to understand the radiological picture of Butt-Chiari syndrome is the fact that in Butt-Chiari syndrome, the caudate lobe, which is draining via a separate vein, that vein is usually spared in the obstruction. So the entire radiology of Butt-Chiari syndrome is based on sparing of the caudate vein. So once you understand this, we just need to look at a few images. Now this is a non-contrast CT abdomen where you can see this is the aorta and you can see it's non-enhanced. So this tells me we are looking at an NCCT. You can see some contrast in the stomach, so you've done an oral contrast. This is the spleen. You can see an enlarged left lobe, and as compared to the central part looks more dense as compared to the peripheral part. Okay, and we see the caudate lobe and the central part of the liver is having more attenuation as compared to the periphery, which is having low attenuation. This is typical of Butt-Chiari syndrome on a plain CT. Now, if I show you the contrast enhanced image of the same patient, what are we able to see? Now, the Thrombus. same thing is executed here. We are able to see
that the periphery is non-enhancing, it is enhancing less as compared to the center, which is enhancing more. You can also see a compressed inferior vena cava. These are typical features of Buchiari syndrome. This patient would usually present with ascites, hepatomegaly, abdominal pain, and we know we are looking at a compressed IVC, enhancement in the central part, enhancement in the caudate lobe, and reduced enhancement in the periphery. Okay. Now, my key take-home messages that I want you to gain from today's spotter series is that in early phase in acute Buchiari syndrome, you will see enhancement of the caudate lobe and the central liver around the IVC, like we saw in this patient. And the peripheral liver would show delayed enhancement. And at that time, the central would have relatively low density, that is called as flip-flop appearance. Because of this enhancement pattern, we may call it as a mottled appearance of the liver. Chronic stages, the caudal lobe will get enlarged and you will be able to see some collateral channels. This is the key take-home message about how to identify Buchiari syndrome on a CT scan. Our intent of this spotter series is to make sure that basic simple radiological diseases, simple disease you can easily learn to identify them on a simple spot based case or on a MCQ based image based MCQ. For more such cases, please follow us on DAMS Daily channel on YouTube, where we keep adding such educational videos. Thank you very much. Next, what do we have? Margins. Margins are regular, irregular, round or sharp. In cancers, the liver edge may be irregular. Okay. Rounded margins, infiltrative disorders. Sharp margins, secondary metastasis, acute hepatitis, biliary obstruction, chronic hepatitis. Away to normal. Smooth surface से malaria, acute hepatitis, infiltrative disorders. Nodular metastatic cancers, hepatoma, alcoholic cirrhosis, micronodular, post-hepatic cirrhosis, macronodular. Consistency अगर soft, firm, hard. In metastatic cancer, the obstructive jaundice, the liver is typically firm to hard. Pulsatility, pulsatility. हमारा pulsatile है कि नहीं, ठीक है. तो pulsatile liver may be present in tricuspid regurgitation. Systolic, tricuspid stenosis, diastolic. Ausculto percussion method, the scratch test. ये क्या है रे? The diaphragm of the stethoscope is placed either over the xiphoid process, okay, or just superior to the costal margin along the midclavicular line. The examiner then gently scratches the screen along the right midclavicular line, starting in the lower abdomen and advance towards the head. The sound produced by the scratching changes in quality and intensity, but over the liver, as sounds are same, more easily transmitted through the solid organ. हेपेटोमेगाली की क्या क्या कॉज है? इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसीज, इन्फिल्ट्रेटेड डिसऑर्डर्स, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और वास्कुलर डिसऑर्डर्स. Infections, mass malignancies, infiltrated disorders, hematological disorders. इन्फेक्शन तो ऑब्वियस चीज़ है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, ये सब डेंगू मलेरिया ये सब की वजह से हो सकता है, ठीक है. मैलिग्नेंसी तो कैंसर, ये इन्फिल्ट्रेटिव डिसीज वगैरह अगर
जैसे कि विल्सन्स डिसीज हो गया, हेमोक्रोमेटोसिस हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि तुम्हारा गॉशर्स डिसीज हो गया, गैलेक्टोसीमिया, पॉम्पेस डिसीज, ये सब। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे कि तुम्हारा ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक डिसीजेस हो गया, ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा, थैलिसेमिया, और भी बहुत सारे हैं हेमाटोलॉजिकल। vascular diseases are shown as a massive hepatomegaly is more than 10 centimeter seen with hepatoma. Okay, what is this? Causes of hepatomegaly. So malignancy में primary hepatocellular carcinoma, metastasis, leukemia, lymphoma, infiltration में fatty liver, amyloid, amyloidosis ना, how did I forget it? इन्फिल्ट्रेशन में तुम्हारा अमाइलोइडोसिस भी होगा, फैटी लिवर भी होगा। हेमाटोलॉजिकल में हेमोरेटिकल एनीमिया, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म। वैस्कुलर में राइट हार्ट फेलियर, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, राइट हार्ट फेलियर, हेपेटिक वेन थ्रोम्बोसिस, राइट, ओके। अदर्स में अल्कोहलिक लिवर डिसीज आ जाएगा, हेपेटो, ये तो ठीक ही है। इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस, एप्स्टीन बार वायरस, मलेरिया, पैरासाइट, ओके। व्हाट इज दिस? कॉर्डेड लोब arises from the right lobe of the liver on the posterior superior surface. So I have certain, this is my chordate lobe, this one, जो कि 1 है ना। The liver is divided into several parts, so this is my number 1। नंबर 2 मेरा उस तरफ है, जो इस तरफ में नहीं, इधर ही है, लेफ्ट लोब। ओके, 3 is here, 4 is here, 5 is here, 6, 7। So this is how it is going counterclockwise, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो कॉर्डेट लोब कहाँ पे है मेरा? कॉर्डेट लोब मेरा ये इंफीरियर वेना कवा के नीचे यहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ से तुम शुरू करोगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे, जहाँ पे मेरे को सेकेंड लोब मिलेगा, उसके फिर नीचे थर्ड लोब, फोर्थ लोब, फिफ्थ लोब, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। Hypertrophy of the chordate lobe is characteristic of the hepatic outflow obstruction. Okay, बुट-चाइल्डी सिंड्रोम। तो हाइपरट्रॉफी मतलब फूल जाना ऑफ कॉर्डेट लोब। अगर कॉर्डेट लोब यहाँ पे फूल गया, ठीक है, स्वेल हो गया, जिससे क्या होता है मेरा हेपाटिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। हेपाटिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यहाँ से जो मेरा बाइल निकल के इसके अंदर जाता है, गॉल ब्लैडर। सो इफ दिस इज माय लिवर, ठीक है, एंड हियर इज माय गॉल ब्लैडर, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसा आता है, और यहाँ से ये ऐसे ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा होता है स्टमक, ठीक है, यहाँ पे मेरा होता है डिओडिनम, और यहाँ पे मेरा होता है पैनक्रियास का हेड, और ऐसे जाता है। यहाँ से भी एक पाइप निकलता है, और ये भी यहाँ से आता है। ये दोनों यहाँ पे जो डिओडिनम है, इसके बीच में यहाँ पे एक बड़ा सा होल यहाँ से ऐसे खुलता है। ये दोनों यहाँ पे ऐसे मैच हो जाते हैं, दे कम्युनिकेट हियर। What is that? Sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi. O-D-I-I. Sphincter of Oddi. There. Okay, so next. What is it? Hypertrophy of the chordate lobe तो हमने जान लिया। Riddle's lobe. What is Riddle's lobe? Congenital variant projecting from the right lobe of the liver. Oh, okay. Congenital. Huh? So if this is my liver, यहाँ से मेरा एक एक्स्ट्रा जो टिश्यू बन के आ रहा है, this one, this is called as the Riddle's lobe. So this is a congenital variation. Congenital का मतलब क्या होता है? Congenital मतलब by birth. By birth. It is a variant projecting from the right lobe of the liver, may be mistaken for gallbladder or right kidney, but it is not. It is the part of the liver. It's called as Riddle's lobe, and it is congenital. Congenital, bro.
नेक्स्ट लिवर का पाल्पेशन हो गया, हमने लिवर का पाल्पेशन में जितना भी जो भी था वो हमने देख लिया। अभी चलते हैं स्प्लीन। नाउ वेयर इज स्प्लीन? सो इफ दिस इज माई बॉडी, इफ दिस इज माई बॉडी, ठीक है, यहाँ पे ऐसा हाथ वाथ बना दो थोड़ा सा, ठीक है, like this, whatever the fuck. So here was my liver, something like this, and here is my stomach, something like this. Where is spleen? Spleen is here actually. Here. I mean, not in the chest exactly. The diagram is not good, but spleen is here. Spleen is something like this. It has a notch actually, something like this. और यहाँ से मेरा आता है स्प्लेनिक आर्टरी, खून देने के लिए। यहाँ पे ऐसा नॉचेस है स्प्लेन के, यहाँ पे ऐसा नॉच, ठीक है, स्प्लेनिक नॉच, ऐसा ऐसा कुछ है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। लेट्स सी भाई। सो हियर इज द स्प्लीन, कहाँ पे मौजूद है? 9th रिब, 10th रिब, 11th रिब, 9th 10th 11th रिब के ऊपर मौजूद है, 9th 10th 11th। सो अरे let me erase these things. Okay, so dimension of this spleen is 12 centimeter in length. तो अगर मैंने यहाँ पे spleen बनाया था ऐसा कुछ, so this is 12 centimeter, 7 centimeter in width, okay, 13 centimeter in craniocaudal diameter. Same thing, craniocaudal means in from head to this one, like this, something like this is 13 centimeter somehow, and it weighs around less than 250 gram. Location is along 9th 10th 11th। तो जैसे कि वहाँ पे डायग्राम पे था, यहाँ पे मेरा आएगा 9th रिब, उसके नीचे आ जाएगा 10th रिब, और उसके नीचे आ जाएगा 11th रिब, और इन तीनों के ऊपर मेरा बैठा है स्प्लीन, ठीक है। सो अलॉन्ग द 9th 10th 11th रिब इन द मिड एक्सिलरी, मिड एक्सिलरी, अच्छा मिड एक्सिलरी मतलब यहाँ से इसके यहाँ से एक्सटेंट एंटीरियरली, मतलब सामने की तरफ से लोअर पोल अप टू द मिड एक्सिलरी लाइन, posteriorly superior angle of the spleen is 4 centimeter lateral to the T10. What the fuck? Superior angle of spleen is 4 centimeter lateral to the T10 spine. T10 मतलब thoracic 10. Superior angle of spleen is 4 centimeter lateral to the T10 spine. Okay. I don't think it is important to memorize this, but anyways. Margin, there is a notch. Yeah, this is the notch that I was talking about. It has a notch on the inferolateral border, and this may be palpated when the spleen is enlarged. Normal spleen is not palpable. Never, 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 never. So normal spleen is less in size, and it is hidden somehow deep inside, okay, behind the stomach, so it is not palpable. So when is this spleen palpable? Spleen is palpable when it is enlarged, like too many times, not just one time, two time, too many times, multiple times of its original dimensions. Only then you can palpate the spleen. Only occasional palpable is 1 to 3% of the New Guinea population. Tip may be palpable in newborn up to 3 months of the age. Okay. Splenic enlargement. Before becoming clinically palpable, spleen enlarges in the superior and posterior direction. ठीक है. So अगर ये मेरा कॉस्टल सबकॉस्टल मार्जिन है और यहाँ पे मेरा ऐसा स्टमक आ रहा है और यहाँ पे कहीं मेरा स्प्लीन है, आई मीन अगेन द डायग्राम इज समथिंग लाइक दैट, तो ये ऊपर ऊपर तो नहीं जा सकता, ठीक है। स्प्लीन एनलार्जेस इन सुपीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन, पहले सुपीरियर डायरेक्शन पे एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन पे एनलार्ज होगा, फिर उसके ऊपर यहाँ पे कोई जगह बचा नहीं है उसको एनलार्ज होने के लिए,
तो जो भी एनलार्ज हो होगा वो इस तरफ एनलार्ज होगा, ऐसे 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 कैसे। So this is how it will be enlarged diagonally, diagonal direction पे. So if this is my body and let me make the body something like this, curved body. So if this is my body and this is my diaphragm, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा स्टमक वगैरह है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा लिवर वगैरह ऐसा है और यहाँ पे है मेरा स्प्लीन। तो यहाँ पे ऊपर तो वो नहीं हो पाएगा एक्सटेंशन क्योंकि उस एनलार्जमेंट, तो जो भी एनलार्जमेंट होगा वो इस तरफ से एनलार्जमेंट होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सो दिस इज एनलार्जिंग डायगनली। तो अगर मुझे पैल्पेट करके देखना है अपने हाथों से तो मैं इस तरफ जाऊँगा पैल्पेट करते हुए, टुक 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 टुक, हाँ यहाँ मिल रहा है मेरे को, यहाँ मिल रहा है मेरे को, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो लेट्स सी। Once palpable, it appears felt below the tip of the 10th rib, beneath under the left costal margin, and further enlarges downward medially. Same thing. So, this is my medial line, and so medially ऐसा आ रहा है ना, अंदर की तरफ आ रहा है, medial line की तरफ आ रहा है. So, the spleen is getting bigger and bigger towards medially and forwards towards the umbilicus. Where is my umbilicus? Umbilicus is somewhere here, so it is coming towards the umbilicus. ओके, सो ग्रेडिंग ऑफ द एनलार्जमेंट का भी ग्रेडिंग है जिसको सीखना पड़ेगा, स्प्लीन के एनलार्जमेंट का ग्रेडिंग। तो बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट डायमेंशन, मॉडरेट स्प्लीनोमेगाली इज 11 to 20 सेंटीमीटर, सीवियर स्प्लीनोमेगाली इज मोर देन 20। ग्रेडिंग ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, तो अगर मैंने लार्जेस्ट डायमेंशन मॉडरेटली स्प्लीनोमेगाली 11 to 20 सेंटीमीटर, मॉडरेट, based on the distance from the coastal margin. So mild tip enlargement 1 to 2 centimeter from the coastal margin बोल रहा है ना. Moderate enlargement 3 to 7 centimeter, 3 to 8 centimeter between coastal margin and umbilicus. Severe marked enlargement is 7 centimeter के ऊपर, more than 8 centimeter below left coastal margin, more than 1000 gram dry weight crossing midline. Size of the spleen is measured from the left costal margin to the tip along the long axis of the spleen. Okay, so this diagram can help us to understand. So this is my spleen जो कि ऐसा diagonally ऐसा आ रहा है, diagonally बड़ा होते होते आ रहा है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, so this is my tip of the spleen. तो अगर मैं यहाँ से measure करूँगा, what is this? This is my subcostal margin. Okay, so yeah, whatever, this is my coastal margin. कोस्टल मार्जिन से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो 1-2 सेंटीमीटर मैक्सिमम, तो दैट इज माय माइल्ड एनलार्जमेंट। अगर कोस्टल मार्जिन से क्योंकि दैट मेक्स मोर सेंस टू मेजर, है ना, क्योंकि उसके नीचे तुम मेजर कैसे करोगे, तो तुमको कोस्टल मार्जिन से मेजर करना पड़ेगा। कोस्टल मार्जिन से अगर 2 सेंटीमीटर तक बड़ा है तो दैट इज माइल्ड, और अगर कोस्टल मार्जिन से तुम्हारा 7 सेंटीमीटर मतलब 3 से 7 सेंटीमीटर अगर बढ़ गया है तो दैट इज मॉडरेट एनलार्जमेंट, एंड अगर 7 से ऊपर बढ़ गया सो दैट इज मार्क्ड एनलार्जमेंट। ओके, सो दैट वाज अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ द स्प्लीन। सो इफ माय प्रोफेसर आस्क, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द ग्रेडिंग ऑफ द स्प्लीन, सो देयर आर 2 ग्रेडिंग सिस्टम। वन इज द एंटायर मास लेंथ, मतलब एंटायर लेंथ ऑफ द स्प्लीन, एक्सियल लेंथ, जो कि तुम्हारा डायरेक्ट मेजरमेंट है 11 to 20 सेंटीमीटर विच इज मॉडरेट। तो मतलब अगर मैं मॉडरेट यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे है मेरा अप टू 7, तो पीछे मेरा होगा ऑलमोस्ट 13। 13, 5, नॉट इवन 5, 4 to 13 पीछे से मेरा बढ़ेगा। So that is one way which is mild and moderate, and severe cases में more than 20.
एंड बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन, अगर कोस्टल मार्जिन से 2 सेंटीमीटर तक बड़ा है तो माइल्ड है, अगर 7 सेंटीमीटर तक बड़ा है तो मॉडरेट है, अगर 7 सेंटीमीटर के ऊपर क्रॉस हो गया है देन सीवियर. ओके, so grading of the what is this spleen is done. Next, what do we have? No, we have another grading that is called as Hackett's grading. Hackett's grading. Hackett's grading of the splenomegaly. So we have grade 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 में नॉर्मल पैल्पेबल इम्पैल्पेबल स्प्लीन, जो कि नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे पाल्पेट नहीं किया जा रहा है. ओके, यू गाइस कैन नॉट सी. Okay, so grade 0 normal impalpable spleen, grade 1 is spleen palpable only in deep inspiration. तो अगर पेशेंट डीप इंस्पायर करेगा तब स्प्लीन जो है थोड़ा सा पाल्पेट होगा. सो दैट इज ग्रेड 1 एंड दिस ग्रेड इज कमिंग फ्रॉम द हैकेट्स ग्रेडिंग सिस्टम. Then we have grade 2 spleen palpable on midclavicular line halfway between umbilicus and costal margin. So if this is my costal margin and if this is my umbilicus, the spleen is palpable on the midclavicular. This is my clavicle. So midclavicular line halfway between umbilicus and costal margin. So somewhere here. Okay, मतलब वो जो स्प्लीन है वो मेरे कोस्टल मार्जिन तक आ चुका है, बड़ा हो चुका है. सो दैट इज ग्रेड 2. ग्रेड 3 स्प्लीन एक्सपांड्स टुवर्ड्स द अम्बिलिकस. तो वहाँ पे वो अभी फ्रॉम द कोस्टल मार्जिन से लेके अम्बिलिकस तक वो बढ़ रहा है. फिर ग्रेड 4 वो अम्बिलिकस तक पहुँच गया है. और ग्रेड 5 इज अम्बिलिकस को छोड़ के प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ बढ़ रहा है अभी. सो उतना बड़ा हो गया है. ठीक है, हाँ सब बड़े हो जा रहे हैं भाई. तो ग्रेड 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 is impalpable, that is grade 0, it is normal. ग्रेड 1 जो कि है तुम्हारा डीप इंस्पायर, तुम जब करोगे तब अगर तुम प्रेस करोगे तब तुमको थोड़ा सा पाल्पेट होगा डीप इंस्पिरेशन पे. सो दैट इज ग्रेड 1. ग्रेड 2 क्या होता है? ग्रेड 2 इज नथिंग बट फ्रॉम योर अम्बिलिकस टिल दी कोस्टल मार्जिन. अगर तुम यहाँ पे मिड क्लाविकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो जो कोस्टल मार्जिन है वहाँ तक पहुँच गया, बड़ा हो गया. ठीक है, सो दैट इज ग्रेड 2. ग्रेड 3 इज नथिंग बट जो कोस्टल मार्जिन है उसको छोड़ के थोड़ा सा सामने बढ़ चुका है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द अम्बिलिकस. Grade 4 is it has reached the umbilicus and grade 5 is it has crossed the umbilicus and moving towards the pubic symphysis. Done. So that is Hackett's grading. इससे पहले हमने जो ग्रेडिंग पढ़ा है वो वाला ग्रेडिंग था, वो हमें मेजरमेंट्स था कि कितना से कितना क्या बड़ा होगा. ठीक है, तो कोस्टल मार्जिन से 2 सेंटीमीटर अगर बड़ा होगा तो माइल्ड होगा. कोस्टल मार्जिन से 7 सेंटीमीटर तक बड़ा होगा तो मॉडरेट होगा. कोस्टल मार्जिन से अगर 7 सेंटीमीटर क्रॉस हो गया तो सीवियर स्प्लीनोमेगाली होगा. एंड दिस इज हैकेट्स ग्रेडिंग. Cool. Next, inspection. Fullness may be seen emerging from the left. Okay, यहाँ पढ़ता हूँ. Inspection. Fullness may be seen emerging from the left upper quadrant. Fullness may be seen emerging from the left upper quadrant, extending diagonally towards the right lower quadrant. Fullness may be seen emerging from left upper quadrant. Fullness may be seen emerging from the left upper quadrant, extending diagonally. हाँ, तो इसमें क्या है? तो तब से तो पढ़ के आ रहा हो ये सब, फिर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? तो पाल्पेशन, फॉलोइंग मेथड्स ऑफ पाल्पेशन हैव बीन डिस्कस्ड. तो अभी पहले हमने वो पाल्पेशन पढ़ लिया था लिवर का, कि हमने जहाँ पे देखा कि कैसे कैसे क्या क्या मेथड होता है. एक होता है कन्वेंशनल मेथड, एक होता है प्रिफर्ड मेथड, एक होता है तुम्हारा हुक मेथड, डिपिंग मेथड, और क्या था? और एक था कन्वेंशनल, प्रिफर्ड, और एक था हुक, डिपिंग. इसको एक और था कौन सा था? अल्टरनेट मेथड. ठीक है, तो हमने लिवर का पाल्पेशन देख लिया था. सिमिलरली वी आल्सो स्प्लीन का पाल्पेशन जो कि हम देखेंगे. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि स्प्लीन ऐसा डायगोनली ग्रो होता है, तो हमको इसे डायगोनली पाल्पेट करके आना पड़ेगा स्प्लीन तक. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास है क्लासिकल मेथड, बाई मैनुअल मेथड, हुकिंग मेथड, डिपिंग मेथड. यहाँ भी है
हुक देखो, क्लासिकल मेथड, बाई मैनुअल मेथड, ये दो तो नॉर्मली होता ही है. Classical and bimanual. Bimanual normally use two hands. Hooking method may also use two hands. You just hook there. And dipping method, so it is there in liver also. And this is the new name that I am hearing today. That is middle tone manual. Middleton's manual. Middleton's. So we have the classical method, bimanual method, hooking method, Middleton's, and dipping method. Okay, so these are the palpation methods. नाउ क्लासिकल मेथड, तो क्लासिकल मेथड में कुछ दिया नहीं है. बाई मैनुअल मेथड में एक है सुपाइन पोजीशन है और एक है राइट लैटरल पोजीशन. तो सुपाइन में सुपाइन ऐसे सुला दो उसको, फिर तुम पालपेट करके जाओगे. एंड एक है राइट लैटरल पोजीशन, तो तुम उसको राइट लैटरल पोजीशन पे सुलाओगे और फिर पीछे से हाथ रख के सपोर्ट दोगे एंड देन तुम यहाँ से पालपेट करोगे. ओके. हुकिंग मेथड में तुम सुपाइन पोजीशन में भी कर सकते हो, लाइट रेक्टल पोजीशन में भी कर सकते हो. मिडिल टर्म्स मेथड देखना पड़ेगा, डिपिंग मेथड देखना पड़ेगा. तो क्लासिकल मेथड में क्या है, पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन, एग्जामिन विद सिंगल हैंड. यहाँ पे तुम सिंगल हैंड अपना डोमिनेंट जो भी राइट हैंड है वो यूज करोगे. प्लेस द हैंड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट. राइट लोअर क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट, right lower quadrant in the RIF and move diagonal. What is RIF? The right lower quadrant in, what is RIF? Oh, right iliac fossa. Okay. So yeah, place your hand in the right lower quadrant in the right iliac fossa and move diagonally towards the left quadrant. Okay. Hand should be firmly placed on the abdominal wall. Keep the hand steady during inspiration and feel for the splenic edges as it descends with each inspiration. Okay. तो तुम ऐसे 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 जाओगे ना, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे 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 ऐसे. So you'll feel on your tip of the finger, I guess. Okay. If edge is not felt, move the hand diagonally towards the lower upper quadrant by 1 centimeter during inspiration. Repeat the procedure. Tip of the finger are used. Tip of the finger are used. That's what I'm telling. यहाँ पे tip of the finger use किया जाएगा. So this is my single-handed classical method. Now is bimanual. Bimanual में मैं दो हाथ यूज करूँगा अपने. तो यहाँ पे क्या करूँगा? Place palm of the left hand over the left lowermost rib cage. Left hand over the left lowermost rib cage, posterolaterally, restricting the expansion of the left lower lips on inspiration. While applying firm pressure with the left hand, ask the patient to take a deep inspiration. While applying firm pressure, तुम एक firm pressure डाल रहे हो with the left hand, ask the patient to take a deep inspiration. Insinuate the right hand beneath the left costal margin and feel for the splenic edges. And देखना पड़ेगा इसको. Right lateral position done with the patient lying the right lateral position. Okay, similar. Hooking method, the patient hooks the fingers beneath the left costal margin. Okay. Hooking manual the same. Dipping method, it is done in marked ascites. Similar depending on liver. Okay. Following methods of percussion have been discussed. Percussion के तीन methods है. Castell's methods, Traubus space percussion, Nixon's methods percussion. Castell's method, Traubus space percussion, Nixon's method of percussion. These are my percussion methods. Castle's percussion, Traubus space percussion, Nixon's methods percussion. Percussion by Castle's method, splenic percussions. With patient in supine position, percussion in the lowest left intercostal space. Percuss in the lowest left intercostal.
anterior axillary line. Okay. Usually the 8th and 9th intercostal space. This space should remain resonant during full inspiration. Normal is resonant, full expiration is resonant. Mild splenomegaly is dull, full expiration may dull resonant. Moderately severe splenomegaly dull. Percussion sign is considered positive when a change in percussion note is observed during the full expiration and inspiration. Percussion of the trapezius semilunar space. It is a semilunar space in the left anterior chest. Left anterior chest bounded by above the sixth rib. Okay. Below by left costal margin. Sixth rib below by left costal margin. Okay. Laterally by the anterior axillary line. Hmm. With patient supine, percus inferior to the lung resonance from medial to lateral. Normally a tympanic note heard due to gastric error. Obliteration of the trapezius space. Massive splenomegaly. Left-sided pleural effusion. Pericardial effusion. Massive splenomegaly. Left-sided pleural effusion. Pericardial effusion. Left-sided pleural effusion. ठीक है. Pericardial effusion. Enlarged left lobe of the liver. Full stomach or fundic mass. Upward shift of trapezius space. Left diaphragmatic paralysis. Left lower lobe collapse or fibrosis. Left diaphragmatic paralysis. I'm getting sleep. टाइम क्या हो गया 9:07:30. अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द ट्रॉपस स्पेस. ठीक है. यहाँ पे ट्रॉपस एक तो ट्रॉप स्पेस यहाँ पे ऑब्लिटेट हो जा रहा है या फिर ट्रॉप स्पेस यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. ऑब्लिट का कारण कारण क्या हो रहा है. एक है स्प्लीनोमेगाली, एक है तेरा प्लूरल एफ्यूजन, एक है पेरिकार्डियल एफ्यूजन. ठीक है. और फिर एनलार्ज्ड लेफ्ट लोब लिवर, फुल स्टमक और फंडिक मास. अपवर्ड शिफ्ट ऑफ ट्रॉपस स्पेस की हो रहा है. लेफ्ट डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस. अगर डायफ्राम पैरालिसिस हो रहा है तो शिफ्ट क्यों हो रहा होगा. लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स होती लंग फाइब्रोसिस. लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स और लंग फाइब्रोसिस. ओके. फिर आता है परकशन बाय निक्सन्स मेथड. पेशेंट इज फर्स्ट प्लेस्ड इन द राइट लैटरल डेबिकोटस पोजीशन. Percussion starts at the midpoint of the left costal margin and is continued upward perpendicular to the left costal margin. Okay. Normally, the level of dullness does not extend further than 8 cm above the costal margin and splenomegaly. Normally, the level of dullness does not extend further than 8 cm above the costal margin. The level of dullness does not extend further than 8 cm above the costal margin and splenomegaly is diagnosed as a dullness extends beyond 8 cm. Okay. So what is the cause of splenomegaly? Mild splenomegaly एक है, moderate splenomegaly एक है, severe एक है. माइल्ड का कारण क्या क्या हो सकता है. एक्यूट इन्फेक्शन जैसे कि सेप्टिक शॉक, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, एंटेरिक फीवर, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ब्रुसेलोसिस, साइटोमेगालोसिस, टॉक्सिकोस्मोसिस. क्रॉनिक इन्फेक्शन में जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, ब्रुसेलोसिस, क्रॉनिक बैक्टीरियमिया, एचआईवी. पैरासाइटिक में जाएगा मलेरिया, कालाजार एंड शिस्टोसोमियोसिस.
इन्फ्लेमेशन में आ जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सार्कोइडस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमाटाइसिस। अदर्स में आ जाएगा कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, थैलेसीमिया माइनर। मॉडरेट स्प्लेनोमेगाली में आ जाएगा न्यूप्लास्टिक, नॉन न्यूप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक में आ जाएगा लिम्फोमा, सर्किट ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। नॉन न्यूप्लास्टिक में आ जाएगा सिरोसिस ऑफ लिवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हेमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, कालाजार, सार्कोइडोसिस, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोसिस, स्प्लेनिक एब्सेस, अमाइलोइडोसिस, हीमोक्रोमाटोसिस, पॉलीसाइथेमिया वगैरह। सीवीएस स्प्लेनोमेगाली में क्या क्या आ जाएगा? कॉमन कॉजेस की क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, माइलोफाइब्रोसिस, कालाजार, प्राइमरी स्प्लेनिक लिम्फोमा, हेरी सेल, मैंटल सेल, मार्जिनल बी सेल। पोर्टल हाइपरटेंशन, एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, हाइपर रिएक्टिव मलेरियल स्प्लेनोमेगाली, ट्रॉपिकल स्प्लेनोमेगाली वगैरह वगैरह। अनकॉमन कॉजेस में आ जाएगा कॉशस डिजीज, निमोनिक डिजीज, थैलेसीमिया, मेजर स्प्लेनिक सिस्ट, ट्यूमर्स ऑफ स्प्leen, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इन्फेक्शन इन एचआईवी पेशेंट्स। ओके, माइलोफाइब्रोसिस हाइपर रिएक्टिव मलेरियल स्प्लेनोमेगाली में। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, सीएमएल तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है सीएमएल। माइलोफाइब्रोसिस भी ठीक है, माइलोफाइब्रोसिस, कालाजार आई डोंट नो। प्राइमरी स्प्लेनिक लिम्फोमास, हेरी सेल, मैंटल सेल, मार्जिनल बी सेल, पोर्टल हाइपरटेंशन, एक्स्ट्रावेरिक पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। मॉडरेट स्प्लेनोमेगाली में न्यूप्लास्टिक वही तेरा सब, लिम्फोमा, एक्यूट ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, लिम्फोमास ए, एक्यूट ल्यूकेमियास, CLL, CML, नॉन न्यूप्लास्टिक में सिरोसिस, सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हेमोलाइटिक एनीमिया, मलेरिया, कालाजार, sarcoidosis, infectious mononucleosis, splenic abscess. Chronic myeloid leukemia, lymphoma, multiple myeloma, hemolytic anemia. Examination of the gallbladder, Murphy sign, Corvizer's law. फिर हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ द किडनी, फिर हमारे पास है रीनल एंगल, एग्जामिनेशन ऑफ द फ्री फ्लूइड एसाइटिस वगैरह, and what else, fat, examination of the veins. Oh, what the fuck, oh, 7:40 almost. I'm getting sleep. We started studying at 5 o'clock, 5 to 6, 6 to 7, and it's almost 7:40. Okay, another 20 minutes until that. Let's finish the examination of gallbladder. Location, lateral edge of the rectus. Location कहाँ पे मिलेगा? Location gallbladder का lateral edge of the rectus abdominis near the tip of the ninth costal margin.
This is Cassell's method of explaining percussion. Percussion on the lowest left intercostal space. Lowest left intercostal space. In the anterior. What is anterior axillary line? If this is my axilla, if this is my axilla, this is my anterior axillary line. This is how it is going. This is my posterior axillary line. Something like that. Okay. क्या देखा था This is hooking method with Millstone's manual percussion. Okay, we have read it. We need to revise that later. ट्रॉपल स्पेस हमने देख लिया ना. अब वहाँ पे सिक्स, यहाँ पे होगा सिक्स रिब. दिस इज माई सिक्स रिब. ठीक है. फिर नीचे होगा मेरा कॉस्टल मार्जिन. तो एंड यहाँ पे होगा मेरा मिड क्लाविकुलर लाइन और मिड एक्सिलरी लाइन. मिड एक्सिलरी लाइन यहाँ पे मिड एक्सिलरी लाइन होगा और यहाँ पे होगा मेरा कॉस्टल मार्जिन. दिस वन. दिस इज कॉस्टल मार्जिन. ठीक है. कॉस्टल मार्जिन, mid axillary line. This is my mid axillary line. Mid axillary line, and this is my sixth rib. So this is my trops space. Trops space. Oh. Gallbladder. This is trop space. So here is my trop space. So somewhere here is my sixth rib. Somewhere here is my costal margin, something like this, and this is my anterior axillary line. So this is my trough space. Here, this is my sixth rib. This is my costal margin. This is my anterior axillary line. So this is my trough space. Okay. Gallbladder. Where is gallbladder? Location. Where is the gallbladder? So lateral edge of the rectus abdominis. Now what is my rectus abdominis? Again I'll have to draw a diagram. So this is my body. This is my body. This is my rectus muscle here and here. Something like this is my rectus muscle here in between TG. So all the packs, 6 packs or something, whatever the thing is. तो यहाँ पे lateral edge near the tip of the 9th costal margin. तो यहाँ कहीं मेरा गॉल ब्लैडर है भाई. Lateral edge of the rectus abdominis near the tip of the 9th costal margin. 9th. How do I remember this as 9th only? 9th gallbladder. How do I remember this as 9th costal? What if I forget until 10th? What if I forget until 11th? So how do I remember it as 9th costal margin? Let me see what is here. Gallbladder. If I make G as something like 9, so can I remember it? Okay, whatever. So if this is my G, you can just turn it as 9 by like this. So 9th costal margin. I hope I remember it. So rectus abdominis के एकदम बाजू laterally, ठीक है, छोटा सा यहाँ पे 9th costal margin के यहाँ पे मिलेगा मेरे को गॉल ब्लैडर. मूव्स विद रेस्पिरेशन के साथ गॉल ब्लैडर भी मूव करता है. अपर बॉर्डर कंटिन्यूस विथ लिवर ऑब्वियसली. तो यहाँ पे होता है मेरा गॉल ब्लैडर. यहाँ पे
कॉजेज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द गॉल ब्लैडर अभी क्यों एनलार्ज हो सकता है, उसका एनलार्ज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हमको जानना है। जैसे कि कार्सिनोमा हेड ऑफ द पैनक्रियास, तो पैनक्रियास कहाँ पे होता है, पैनक्रियास कहीं ना कहीं यही भी होता है, समवेयर हियर ओनली एंड द टेल को समथिंग लाइक दैट। तो इसके हेड में अगर कोई कैंसर है तो इसको भी इफेक्ट करेगा। कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, सो इफ दिस इज माय गॉल ब्लैडर से मेरा निकलेगा सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट सिस्टिक डक्ट मेरा ज्वाइन करेगा सिस्टिक डक्ट है ना, यहाँ पे लिवर से ज्वाइन करेगा दो ऐसा। सिस्टिक डक्ट यहाँ पे ऐसा आएगा कॉमन बाइल, अरे भूल गया, मेरे को देखना पड़ेगा। कॉमन बाइल डक्ट कहाँ से बनता है, एक है मेरा राइट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट यहाँ से इनके साथ मिलकर बनता है कॉमन बाइल डक्ट। फॉरगॉट 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 गॉल ब्लैडर anatomy, cystic duct. Okay, let's see. So इसमें उतना छोटा क्यों दिखाई दे रहा है, हाँ this one. Okay, we'll go there and see. Okay. Da. I don't know if you guys can see. So this is my gallbladder. Here is my right hepatic duct, left hepatic duct, right hepatic branch and duct, left hepatic branch. या क्या हो गया इसको, तो यहाँ से मेरा आ रहा है, दिस इज माई सिस्टिक आर्टरी, सो दिस इज माई सिस्टिक डक्ट ऑब्वियसली। सो अबे व्हाट द फक, सो दिस इज माई सिस्टिक डक्ट, यहाँ से मेरा राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आके मेरा बन रहा है कॉमन हेपेटिक डक्ट, या कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर मेरा यहाँ पे बन रहा है बाइल डक्ट, दिस इज माई बाइल डक्ट इन दैट केस। नाउ दिस इज द आर्टरी, हाँ कॉमन, अरे दिस इज द आर्टरी और दिस, हाँ बाइल डक्ट, so this is my bile duct. Got it guys, got it. So if उल्टा बना दिया गया, something like that. This is my cystic duct, this is coming from my liver, right and left. Raj bro is playing space war, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कॉमन हेपेटिक डक्ट, फिर ये मेरा यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाने के बाद यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू होगा सो बाइल डक्ट, सो दिस इज माय बाइल डक्ट। ओके, गॉट इट। ऐसे आएगा म्यूकोसील इन गॉल ब्लैडर, कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, सो दीज आर द थिंग्स दैट कॉज एनलार्जमेंट ऑफ द गॉल ब्लैडर। कार्सिनोमा, कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट कौन सा होता है, ये मेरा बाइल डक्ट है, ये मेरा बाइल डक्ट है, ये मेरा कॉमन बाइल डक्ट है, इसको भी बाइल डक्ट बोला जा सकता है, बट आई थिंक दिस विल कम लिटिल फर्दर हियर, और ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा समवेयर हियर। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो इससे बैक फ्लो होगा, ये डिस्टेंशन यहाँ पे होगा। मर्फीज साइन इज नथिंग बट इट इज इन एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस मीन्स मेरा गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन, At the height of the inspiration, patient stops breathing with a gasp as a mass is felt. तो मर्फीज साइन क्या होता है? मर्फीज साइन इज नथिंग बट जब यहाँ पे मेरा गॉल ब्लैडर पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है, जब पेशेंट इंस्पायर करेगा, जब पेशेंट अब्रप्टली स्टॉप्स ब्रीथ, अपना इंस्पिरेटरी जो ब्रीथ है वो स्टॉप कर देगा, विद अ गैस्प ऑफ ए मास इज फेल्ट। ओके, दैट इज मर्फीज साइन। एंड व्हाट इज Courvoisier's law? In a jaundice patient, if the gallbladder is palpable,
It is unlikely to be due to CBD gallstone obstruction. इन्हें जॉन्डिस एक को जॉन्डिस का पेशेंट है और अगर उस जॉन्डिस के पेशेंट में गॉल ब्लैडर अगर पाल्पेबल इफ द गॉल ब्लैडर इज पाल्पेबल so it is unlikely to be due to CBD gallstone obstruction. Okay, so it is unlike मतलब यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट ये जो मेरा कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पे गॉल स्टोन के ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस कम है if I am able to palpate this one in case of a jaundice patient. That is Corvizer's law. But why is it so? If the gallbladder is palpable, it is unlikely to be due to the CBD gallstone obstruction. I need to see this. Okay, why is it? A gallbladder containing stone is likely to have been chronically diseased and subject to repeated, although possibly subclinical episodes of cholecystitis. This result is extensive fibrosis of the gallbladder wall, which in okay. The converse of this law is not true. The cause of jaundice in non-palpable gallbladder is not necessarily gallstones as 50% of the gallbladder. Exception of the Corvizier's law. Double infection. Stones simultaneously occurred in the cystic duct and the distal CBD. The stone in the CBD causes obstructive jaundice and synchronous stone in the cystic duct leads to mucociliary empyema of the gallbladder. Pancreatic calculus obstruction and ampulla of water. क्या है ये? See, I don't think I should know all these things. I just should know what is the cause of the enlargement of the gallbladder. One is carcinoma of the head of the pancreas. One is common bile duct obstruction. One is mucociliary in the gallbladder. One is carcinoma of the gallbladder. Enough. So I need to know the causes of the enlargement of the gallbladder. Carcinoma, common bile duct obstruction, mucociliary in the gallbladder, and carcinoma. Then I need to know these two signs. One is called as Murphy's sign. The other one is called as Corvizer's sign. So Murphy's sign is nothing but during inspiration, if there is cholecystitis and all, the patient abruptly stops breathing and feels like there is some mass. And Corvizer's law, it is nothing but if in a jaundice patient, if the gallbladder is palpable, it is unlikely due to the CBD gallstone obstruction. Done. What is Mirizi syndrome? Mirizi. A stone is lodged in the Hartmann's pouch, causing intense inflammation in the region of the Calot's triangle. Okay. And compressing the common hepatic duct. Okay. While also obstructing the gallbladder, this causes gallbladder to distend. Okay. So that is called as Mirizi syndrome. Mirizi syndrome. Mirizi syndrome. So in this case, what is happening is, so inside the gallbladder there is a structure called as Hartmann's pouch. अगर उसके अंदर स्टोन भर गया चला गया तो सीवियर इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा इंटेंस एंड जो कैलोट रीजन कैलोट ट्रायंगल है कैलोट ट्रायंगल के अंदर कंप्रेशन होगा हेपेटिक डक्ट का ठीक है सो दैट वाज इट so we are done with the liver we are done with the spleen we are done with the gallbladder also next we have is examination of the kidney examination of the left kidney examination of the right kidney unilateral kidney enlargement bilateral kidney enlargement unilateral kidney enlargement क्यों होता है renal cell carcinoma hydronephrosis bilateral क्यों होता है polycystic kidneys bilateral hydronephrosis फिर what is renal angle Murphy's kidney sponge costovertebral angle tenderness causes of costovertebral angle tenderness renal angle क्या होता था an area located on either side of the human back between the lateral border of the erector spinae lateral border of the erector spinae muscle and inferior border of the 12th rib ठीक है तो यहाँ पे मेरा जो लैटरल बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी है इरेक्टर स्पाइनी मसल है कहाँ से आता है वहाँ से आता है स्पाइन वगैरह वहाँ से पीछे से आता है तो लैटरल बॉडी सॉरी लैटरल बॉर्डर ऑफ द इरेक्टर स्पाइनी एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब मतलब जो लास्ट वाला रिब है ठीक है
So inferior border of the 12th rib and lateral border of the erector spinae, इन दोनों से मिलकर बनता है मेरा रीनल एंगल. लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या करूँ मैं इसको जान के. Murphy's kidney punch, costovertebral angle tenderness. It is performed by striking the first of one hand against the dorsal surface of the other hand, which is placed flat around. It is performed by striking the first of the hand against the dorsal surface of the other hand, which is placed flat along. The posterior costovertebral angle margin, normally proportional in CVA, should not elicit tenderness. Okay. Cause of the costovertebral angle tenderness: acute pyelonephritis, calculi, perinephric abscess. तो जो कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस है वो क्यों होता है? किडनी के पायलोनेफ्राइटिस की वजह से, कैलकुलाई अगर किडनी में स्टोन है तो, और अगर पेरिनेफ्रिक एब्सेस है तो. डिफरेंस बिटवीन स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी. स्प्लीन क्या होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है और ये लेफ्ट लंबार में है. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ एनलार्जमेंट टुवर्ड्स द राइट इलियक फोसा, टुवर्ड्स द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड लेफ्ट इलियक फोसा. ओके. मूवमेंट विद रेस्पिरेशन नॉट देयर. स्प्लीन का मूवमेंट विद रेस्पिरेशन किडनी का नहीं है. इंसिनुएशन बिटवीन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड ऑर्गन नॉट पॉसिबल. Insinuation between left costal margin and organ. Bimanual palpation. Crossing midline. Crossing midline. I was about to fall asleep there. Different points between liver versus spleen versus kidney. Location: right hypochondrium, left hypochondrium, lumbar. Direction of enlargement towards the right iliac fossa, spleen is towards the right iliac fossa, lumbar is towards the hypochondrium and iliac fossa. Insinuation of the fingers between the costal margin and organs, not possible, not possible, possible. Bimanual palpable, possible. Ballotability, possible. Anterior percussion, rural tympanic. Okay. Tympanic क्योंकि that is retroperitoneal organ. Which is retroperitoneal organ? Kidney. So we are done with the kidney also. Somehow. Then we are left with ascites. Free fluid in the abdomen. Ascites एक बाकी है. सीरम ascites, albumin, getting साग वगैरह है. शिफ्टिंग लेंस एग्जामिनेशन वगैरह ये सब है. फ्लूइड थ्रिल एक है. एग्जामिनेशन ऑफ द डायलेटेड वेन्स एक बाकी है. पोर्टोकेवस अनास्टोमोसिस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिरोसिस, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, जिसकी ग्रेडिंग मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी. हेपेटोरिनल सिंड्रोम में बाकी है. ओके. This was intense, bro. Hello guys, what's up? Anybody here? Can you guys listen to me? Hello people, what is up? I am done. It was so stressful. I was getting sleep in between because I couldn't sleep and it was tiring the whole day. Phew.
fine, I'll go have my dinner. And then after dinner, I have to edit a video. So this is what, 8 o'clock, 8 to 9, 9:30. Until 9:30, I will eat my food and I'll edit my video. And then hopefully by 10, I'll be here gaming live. And then, yeah, that's all. Okay, guys, fine, bye bye. Ending this stream. Okay.